गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी। आपके गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस में आपके एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि जो आपके डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा काम का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में काम करते हुए, वो जो है अब डायरेक्टली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो टाई अप करके एक तरह से कोर्स और करिकुलम बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। और इवन जो समझ लो आप, जैसे होता है ना कि लेक्चर्स लेने आते हैं पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, तो वो जो है आ पाएंगे और डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स के साथ जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब फॉर्मली एसोसिएट हो पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है कि कौन से डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स आ पाएंगे इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उसके लिए रखा है कि वो एक तो टीचिंग प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इंडस्ट्री में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल या 15 साल से ज़्यादा का, और वो एक सीनियर लेवल पर अगर हो तो बहुत अच्छा है। और उनकी फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहे ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको उस फील्ड में, उस रेलिवेंट फील्ड में जो है, अब समझ लो आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, तो वो 15 साल से ऊपर का अगर उनको एक्सपीरियंस है और वो उसमें काम कर चुके हैं, उस फील्ड में, इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, और वो फिर जो है फॉर्मली एसोसिएट हो पाएंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है। तो मोटिव इस स्कीम का यही है कि वो जो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स हैं वो हम अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको हम इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स के साथ जो है इक्विप कर सकें। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम क्लासरूम्स में लेके जा सकें, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो हम देखते हैं यूजीसी के बारे में भी। तो यूजीसी जो है सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आई थी, उसके बेसिस पर जो है वो एक तरह से बनाया गया था। इस सर्जेंट रिपोर्ट के बेसिस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाई गई थी 1945 में, ताकि जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, उनके जो है फंक्शनिंग को देख सके। ठीक है। फिर जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया 1948 में, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधा कृष्ण जी के द्वारा के अंदर। और फिर उसी की ही रिकमेंडेशन पर जो है उसी कमेटी की रिकमेंडेशन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जैसे यूके का है वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए, जिसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे। फिर उसी के बाद जो है गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स ये यूजीसी को बना दिया था 1953 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है। फिर 1956 में यूजीसी को जो है स्टेचुटरी स्टेटस भी मिल गया था, मतलब एक एक्ट पास कर दिया था, यूजीसी एक्ट 1956 में। लेकिन अब आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की है, वो कह रही है कि यूजीसी को आप स्क्रैप करो और उसकी बजाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लेकर आओ। ठीक है। उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है और आने वाले टाइम में जो है वो कुछ टाइम में आने भी वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ये भी आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए जो अवार्ड्स दिए हैं, तो इंदौर जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है 6th ईयर इन अ रो। 2000 जो है आपके 16 से ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जा रहा है, और हर साल, हर जो है साल जो है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी जो है वो कंट्री में देखी गई है। ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट जो है माना गया है इन द कंट्री। सूरत जो है वो सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। नवी मुंबई जो है वो थर्ड क्लीनेस्ट सिटी कंट्री में मानी गई है। ठीक है। ऐसे ही विशाखापट्टनम फोर्थ क्लीनेस्ट सिटी है। अलग अलग कैटेगरी में भी जो है वो बेस्ट सिटी के अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसे तिरुपति जो है, अगर उसको देखें तो बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया है उनको, क्योंकि सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग सिटीज़ जो हैं कंट्री की, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। आपको बस बेसिक से ही पता होना चाहिए। अब स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या? तो ये एनुअल सर्वे किया जाता है क्लैनलीनेस का, हाइजीन का और सैनिटेशन का सिटीज़ और टाउन्स के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से परफॉर्म हो रहा है आपकी सिटीज़ या टाउन्स में, उसके बेसिस पर एनुअल सर्वे किया जाता है। कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2016 से इसको करना शुरू किया। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। सो पहला सर्वे जो है 2016 में किया गया था, तब सिर्फ 73 सिटीज़ को ही जो है वो सर्वे किया गया था। लेकिन अब जो है 442 सिटीज़ एंड टाउन जो है टोटल, उनमें ये सर्वे किया गया है। ठीक है। अगर हम 2020 का देखें तो 2021 में तो जो है वो और ज़्यादा जो है वो नंबर बढ़ चुका है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स, आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी जो है अपने नदर्न बॉर्डर्स मतलब चाइना बॉर्डर पर हम M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर को लगाना शुरू कर चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर जो है इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है वो बहुत सारी गन्स और जो है जैसे कि धनुष, शरांग, ये होविट्सर, फिर वज्र होविट्सर, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इन सब को जो है आपके चाइना बॉर्डर पर लगा चुकी होगी। ठीक है, फिर अब ये हम देखते हैं M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर हैं क्या। तो इनकी रेंज जो है वो लगभग 30 किलोमीटर है, बट कहा जाता है कि इनकी टारगेट रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक भी हो सकती है। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के अलॉयज से इसको बनाया गया है। 4218 किलोग्राम की ये होविट्सर होती हैं। ठीक है, तो जो है इसको इंडियन एयरफोर्स के जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो भी कैरी करके लेके जाते हैं और वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में लगा देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है G20 शेरपा, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उसने रिसेंटली थर्ड G20 शेरपा मीटिंग जो है इंडोनेशिया में उसमें पार्टिसिपेट किया है। शेरपा कौन होते हैं? शेरपा जो है वो लीडर, जो भी कोई मेंबर कंट्री होती है, चाहे वो G8 के अंदर जो हमारे G8 हो, ग्रुप ऑफ 8 हो, G20 हो, चाहे न्यूक्लियर कोई भी समिट होती है जब, तो उसमें जो हमारे जो जैसे जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो है एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारा जो है मीटिंग्स को शेड्यूल करते हैं, देखते हैं कि क्या हम, जैसे समझ लो आपको पता है ना कि G20 की तो एक ही समिट होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, लेकिन उसमें उसके लिए प्रेपरेटरी जो समिट्स होती हैं कम से कम 100-200 से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं जिसमें एजेंडा डिसाइड किया जाता है कि क्या बातें होंगी, उसमें क्या मीटिंग में डिस्कशन होगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ये जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं G20 के, या जैसे इस केस में हम G20 के देख रहे हैं तो जो शेरपा हैं वो सारे नेगोशिएशन, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम देखते हैं। ठीक है, तो ये प्री समिट कंसल्टेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जनरली जो है ये डिप्लोमेट्स होते हैं या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको जो है लीडर्स ऑफ देयर कंट्री ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुद्धिस्ट केव्स इन बांधवगढ़। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगभग 26 बुद्धिस्ट केव्स मिली है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो ये महायान सेक्ट को जो है वो बिलोंग करती हैं ये केव्स, और कहा जा रहा है कि ये अजंता केव्स के आसपास ही बनाई गई हैं। जब अजंता केव्स बनाई गई थी औरंगाबाद में, उसी के टाइम पर ही आसपास बनाई गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको 26 टेम्पल्स, 2 मठ, 2 स्तूपा, 46 आइडल्स एंड स्कल्पचर्स, 26 फ्रेगमेंट्स और 19 वाटर बॉडीज़ के भी रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि उस टाइम पर जो है कुछ किंग्स के भी जो है वो नाम इंस्क्राइब्ड हमको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। श्री भीमसेना, महाराजा पोथासिरी, भत्ता देवा, इन सब के नाम भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बांधवगढ़ तो आपको पता ही है नेशनल पार्क है। 1968 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। लेकिन अब हम देखते हैं महायान बुद्धिज़्म और हीनयान बुद्धिज़्म में फ़र्क क्या है। तो महायान बुद्धिज़्म कहता है कि गौतम बुद्ध जो है वो एक डिवाइन बीइंग है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं थे और वो अपने फॉलोअर्स को निर्वाणा दिलवाने के लिए हेल्प करने आए थे। लेकिन हीनयान बुद्धिज़्म कहता है नहीं, वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ही थे जो कि खुद निर्वाणा ले चुके हैं। और जो महायान बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत इस रीजन में है। जो हेनयान बुद्धिज़्म में है वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में है। ठीक है, अब महायान बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन हिनयान बुद्धिज़्म जो है वो संस्कृत से जो है वो आगे बढ़कर पाली भाषा में जो है वो स्क्रिप्चर्स को लिखना शुरू किया उन्होंने। महायान बुद्धिज़्म 500 BC में फैला और जो है हीनयान बुद्धिज़्म जो है वो 250 BC में फैलना शुरू हुआ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो आपके इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड ये क्या होता है आपको पता ही है ना। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो अपने AGR, एनुअल जनरल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बेसिस पर जो है जितना भी उनकी कमाई होती है उसका कुछ परसेंट, जनरली 5% होता है, वो एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड में जमा करती हैं जो कि सरकार जिसका मैनेज कर रही है। और उससे होता क्या है कि जितना भी इसमें पैसा जमा होता है उस पैसे को जो है रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में टेलीकॉम फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा।
तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड ने ही अब टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को कैसे अच्छे से पहुँचाया जा सके, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ़ंडिंग की जाएगी। अकेडमिया, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री हाथ मिलाकर टेलीकॉम इकोसिस्टम जो है आपके रिमोट एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में फैलाने की कोशिश करेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ग्रांट्स भी दी जाएंगी आपकी उन इंडियन एंटिटीज़ को जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ बनाना चाह रही हैं और डोमेस्टिक हमारी कंट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए वो रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्थ स्ट्रीम। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 है वहाँ पर लीक हुआ है, फोर्थ लीक देखने को मिला है, जिससे क्या हो रहा है कि जो रशिया से जर्मनी में गैस जाती थी वो बीच में स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो बाल्टिक सी में ये लीक देखने को मिला है नॉर्थ स्ट्रीम में। तो नॉर्थ स्ट्रीम जो है पाइपलाइन आपकी 1224 किलोमीटर की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया से गैस जो है वो जर्मनी में पहुंचाती है यूजिंग बाल्टिक सी। तो रशिया की जो स्टेट लेड आपकी गैस कंपनी है गैसप्रॉम, वो उसी ने ही ये जनरली जो है ये पाइपलाइन बिछाई है, और ये गैस को कैसे रशिया से डायरेक्टली जर्मनी पहुंचाया जा सके उसके लिए जो है इसको बनाया गया है। तो 1200 किलोमीटर की नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम 1 के साथ ही बनाई गई है, और उसको भी रशिया से जर्मनी में गैस पहुंचाई जा रही है बाल्टिक सी के थ्रू, ठीक है। सो ये ऑफ कोर्स आपके ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है रादर, और लेकिन इसमें भी जो है वो लीक देखने को मिला है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लैक कोकेन। आपके सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एनसीबी ने एक बोलीविया की एक लेडी को पकड़ा है मुंबई एयरपोर्ट से, जो कि ब्लैक कोकेन को कैरी कर रही थी। तो ब्लैक कोकेन क्या है, एक रेयर ड्रग है जो कि आपकी नॉर्मल कोकेन होती है, उसके ऊपर कुछ जो है केमिकल्स लगा दिए जाते हैं ताकि जो स्निफर डॉग्स हैं एयरपोर्ट्स पे वो कोकेन को डिटेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये ड्रग पैडलर्स खासकर यूज़ करते हैं। कार्बन के कुछ केमिकल्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं कोकेन के ऊपर, ताकि जो डॉग्स हैं वो पता ना लगा पाएँ सूंघ कर कि ये कोकेन लेकर जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो एक रेगुलर कोकेन के ऊपर कुछ जो है वो ड्रग्स लगा दिए जाते हैं जो कि अनडिटेक्टेबल रहते हैं आपके ड्रग स्निफिंग डॉग्स द्वारा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की लेयर लगाई गई है वो जो भी ओडर हो रहा है आपका ओडर होता है जो आपका कोकेन का, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो है वो डॉग्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब टारगेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं वो ब्लैक कोकेन, फिर जो है उसको मिथिलाइन क्लोराइड या फिर एसीटोन का यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसका कार्बन हटा दिया जाता है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Professors of Practice Initiative of UGC. So this topic is important for your governance section. You know that education subtopic is a part of that governance topic. So this topic is important for that section. So you know that UGC has recently initiated this Professors of Practice initiative. Under this initiative, courses and curriculum would be designed using these distinguished experts who would be now formally associated with the higher educational institutions. So these distinguished experts would be rather persons of eminence who have some industry relevant skills and industry relevant experience, and they would start now working with these higher educational institutions so that their proven expertise in a specific profession or role can be brought towards the classrooms. So what is the eligibility criteria? So these people must be distinguished experts who have made some remarkable contributions in their fields or professions, and they should not be from the teaching profession. It does not mean that if we are looking forward to some aeronautical engineer, it does not mean that he or she should be a teacher of that particular subject, because we want industry people from industry who have had some experience in the industry on the ground. We want them to come to our classrooms of these higher educational institutions and teach to the students. Okay, so they should have at least 15 years of experience. Even if they do not have a formal academic qualification, it is okay. They should not there is no criteria that they should have made some publication, etc., but they should have certain skills which are industry relevant. Okay, so the aim of this professors of practice scheme is to
take real world practices and experiences into the classrooms, and the industry and society will also benefit from this because we will be producing these graduates who will be equipped with industry relevant skills. So what is UGC? UGC, you know that Sargent report was made in 1954, and this report led to the formation of a university grants committee, which was meant to oversee the work of three central universities of Aligarh, Banaras, and Delhi. And this was established in 1945. But after the country's independence, the University Education Commission was established under the chairpersonship of Dr. Radhakrishnan ji, and this committee, or based upon the report of this Indian University Commission, the UGC was formed in 1953 by Maulana Abul Kalam Azad ji. Okay, so it was given a statutory status also by the UGC Act of 1956, and now you know that after National Education Policy of 2020, the government is considering the proposal of replacing this UGC with another body called Higher Education Commission of India, and probably in the next few months or by next year this would be done also. So the next topic is Swachh Sarvekshan 2022. So President Draupadi Murmu ji has presented awards as part of Azadi at 75. So these Swachh Sarvekshan awards have been given. You know that since the time this Swachh Sarvekshan has been conducted, Indore has consistently been ranked as the cleanest city of India, and Madhya Pradesh has been ranked as the cleanest state in the country. So Surat is the second cleanest city. Navi Mumbai is the third cleanest city, and similarly Visakhapatnam is the fourth cleanest city. Similarly, some other category of other categories in Swachh Bharat Abhiyan have also been announced, in which other cities have also performed good. So what is this Swachh Sarvekshan? So actually it's an annual survey of cleanliness, hygiene and sanitation, which is conducted in cities and towns across the country as part of the Swachh Bharat Abhiyan. So basically we are saying if this Swachh Bharat Abhiyan is making an impact in our cities or not. So this Swachh Sarvekshan was launched in 2016 by the Ministry of Housing and Urban Affairs, and Quality Council of India is the implementation partner of the ministry for this particular Sarvekshan. So the next topic is M777 ultra light howitzers. This topic is important for your security section. So Indian Army is inducting M777 ultra light howitzers on the northern borders with China, and in the next 5 years the army plans to have several guns, including indigenous ones, placed on the Chinese border. So it includes the Dhanush, Sharang, M777 ultra light howitzers, Vajra howitzers, K9 Vajra howitzers, and even ATAGs. So what is this M777 ultralight howitzer? So it has a range of up to 30 kilometer, but it is said that it is capable of striking targets at the range of more than 40 kilometers also in some areas, and it is built with titanium and aluminum alloys. That's why it is comparatively less heavier than the normal howitzers. Also, Chinook helicopters, the Indian Air Force Chinook helicopters are able to carry these howitzer and deploy them in high altitude areas of northern borders. So the next topic is G20 Sherpa. This topic is important for your international relations. So India has recently participated at the third G20 Sherpa meeting in Indonesia. So who is a Sherpa? So Sherpa is basically a personal representative of the leader of a member country who is participating in summits such as G8, G20, or even other nuclear security summits. Okay, so these Sherpas are personal representatives of the leaders who plan, negotiate, and implement all the tasks throughout the summits, and they also engage themselves in a series of pre-summit consultations, so that when the actual summit happens, the entire task is already carried out by these Sherpas on behalf of their leaders. So because they are personal representatives of the leaders, so these are appointed by these leaders only. Okay, generally these are the career diplomats or senior government officials who are appointed by the leaders of the countries.
So the next topic is Buddhist caves in Bandhavgarh. So this topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India has recently reported that 26 Buddhist caves have been found at Bandhavgarh Tiger Reserve area of Madhya Pradesh. So these caves belong to Mahayana sect of Buddhism, and it is said that they were built during at the same time as that of Ajanta caves, as when the Ajanta caves were built in Aurangabad. So besides the caves, ASI team has also found 26 temples, two mutts, two stupa, 46 idols and sculptures, 26 fragments, and 19 water bodies. Of course, these will be the remains of these bodies. Okay, so the inscriptions on these caves are found to be the kings who were there at that time: Shri Bhim Sena, Maharaja Pothasiri, and Bhattadeva. You know that Bandhavgarh Tiger Reserve is actually a national. It was actually a national park in 1968, and it was declared as a tiger reserve in 1993. It is located in, of course, Madhya Pradesh. So, what is the difference of between Mahayana Buddhism and Hinayan Buddhism? Where, because we have seen that these are Mahayana caves. So, actually, in Mahayana, the belief is that Gautam Buddha is a divine creature who came on earth to help his followers to attain nirvana. But in Hinayan Buddhism, it is believed that he was just an ordinary human being who has attained nirvana, and that is what Hinayan sect believes. And the followers of Mahayana Buddhism reside currently in China, South Korea, Japan, and Tibet. But Hinayan followers are located in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, and Laos. In Mahayana Buddhism, the scriptures are written in Sanskrit, but whereas in Mahayana Buddhism, the scriptures are written in Pali language. So it's this Mahayana Buddhism flourished in 500 BC, and the Hinayan Buddhism started flourishing around 250 BC. So the next topic is Telecom Technology Development Fund. So you know that this topic is important for your science and tech and economy section also. So Universal Service Obligation Fund. So for those who do not know about it, let me tell you in brief that there is there is a compulsion to all the telecom companies that whatever their AGR is, adjusted gross revenue is, 5% of it has to be submitted to the government in the form of this in this Universal Service Obligation Fund, so that the money that the government gathers through these telecom companies' revenues, this money would be spent in establishing critical telecom infrastructure in remote and rural areas, because otherwise the private companies would not be creating infrastructure in those areas. Okay, because it is not profitable for them. So for that, this USOF was formed, and now it has launched this Telecom Technology Development Fund scheme also, which will fund R&D activities in rural specific communication technology applications. So academia, startups, research institutes, and industry will come together and establish technologies which will be targeting these rural specific areas, and this will also help giving grants to Indian entities who are establishing indigenous technologies which are tailor made for the domestic needs. So the next topic is Nord Stream. This topic is important for our international relations. So it has been recently discovered that there was a fourth leak also in the two offshore pipelines that transfer gas from Russia to Europe. So you know that Nord Stream 1 is almost 1200 plus kilometers long, and it's an underwater gas pipeline which runs from Russia to Germany via Baltic Sea, and majority of it is owned by a Russian state energy giant Gazprom, and most of the gas goes directly to Germany, and from that this gas now then travels to the rest of the Europe. And there is also another pipeline besides Nord Stream 1. The second pipeline is called Nord Stream 2, and it also transfers gas from Russia to Germany, and it runs parallel or it runs closer to the Nord Stream 1 pipeline also. But there has been leaks, so that's why the gas supply has been suspended temporarily, and it would take a considerable time to repair these pipelines now. So the next topic is black cocaine.
This topic is important for your social issues. And NCB has recently arrested a Bolivian lady from Mumbai airport because she was allegedly carrying black cocaine, which is a rare drug, which is basically regular cocaine, but other chemicals are administered to it, so that the sniffer dogs which are used at airports to detect drugs do not detect it, because these drug peddlers do not want to be get to of course to get detected. So what they do is they mix regular cocaine with some color based substances, mostly which are having carbon, so that the odor that cocaine emits is absorbed by these activated carbons, and the drug sniffing dogs do not smell it. Okay, so once they reach their destination, this black cocaine is converted back into normal cocaine using some extraction tools like methylene, chloride, and acetone. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.